the power amplifier. The power stage of any amplifier is actually called the output stage, right? Where most of the power from the amplifier is actually taken out and given to the load. Now, in this process of deriving the power, okay, mm, so I mean, if you have this amplifier which is biased with plus minus VCC, right? And there is the input signal given, and there you take the output. So output, obviously, it will be going towards the plus VCC and towards the minus VCC. That's the maximum that we get from the output. So here it's going to be plus VCC, and here it's going to be minus VCC. Okay. And obviously, if you connect some load, then there will be the load current also, the IL. IL will also have some maximum, and so maybe you have the IL curve also, which is a sinusoid, which is something like this. And accordingly, you can find out the power, right? So red curve is for the IL, and green curve is for the voltage. So you can accordingly find out the power. Now, where from this power is coming? This power is coming, you see, the voltage or the current, right? ये इसी से मिल रहा है. So you have the active devices in this amplifier. These active devices are actually responsible for transferring the DC, converting this DC into AC. Is that okay? This DC is being converted into AC by the active devices under the stimulation of the input. ठीक है? इनपुट से हम एक्टिव डिवाइस को स्टिमुलेट करते हैं, और वो एक्टिव डिवाइस जो डीसी बायस के इन्फ्लुएंस में है, उस डीसी बायस को कन्वर्ट करती है इस एम्पलीफाइड सिग्नल में. करेक्ट? So actually DC is being converted into, this is being converted into a large amplitude AC. इनपुट पे स्टिमुलस छोटे एम्पलीट्यूड का है, and it is to be noted that no current is allowed to flow through the input. So there is no power taken from the source. जो source यहाँ लग रहा है उससे कोई भी power नहीं ली जाती, almost zero current but no power taken. तो कोई power नहीं ली जा रही है, and इसी सिग्नल का एक बड़ा रेप्लिका आउटपुट पे मिल रहा है. तो actually this signal is being converted into a large power signal at the output with the help of these active devices. And these active devices are actually converting this DC power into the AC power. Is that understandable? Is that okay? Yes, sir. Okay, so ये भी बात नोटिस करने की है कि मैक्सिमम और मिनिमम जो स्विंग है सिग्नल का, that is also decided by the bias, plus VCC and the minus VCC, right? And the current swing is decided by the load, right? And of course the plus minus maximum of the output.
Okay, while we drive the output to its extremes, जैसे ही output को हम कोशिश करेंगे कि maximum प्लस VCC माइनस VCC पे जाए, तो एक्चुअली जो एक्टिव डिवाइस यहाँ लग रही है अंदर, हम उस डिवाइस को कंस्ट्रेन कर रहे हैं कि वो नॉन लिनियरिटीज में ऑपरेट हो। ये जो डिवाइस है, अगर हम इसे कहते हैं कि पूरा प्लस VCC और माइनस VCC का आउटपुट दे हमें, अभी हम सिर्फ एक दिखा रहे हैं और बहुत सी डिवाइस लगी होंगी उसमें। सो एक्चुअली वी आर constraining this active device to operate into non-linearities, thereby causing its peak to get distorted. This is what I spoke yesterday. So अगर हम कोशिश करते हैं कि आउटपुट मैक्सिमम प्लस माइनस VCC को जाए, then we will be forcing devices, active devices, to operate into non-linearities for a significant part of its transfer characteristic. And once it operates into non-linearities, then it would result into nonlinear distortion, thereby causing harmonic distortion in the output. Therefore, the input, the perfect sinusoid input, would appear at the output as a combination of its harmonics also, which is undesirable. तो ये जो आउटपुट स्टेज होती है, पावर एम्पलीफायर स्टेज होती है, इसकी एक मेजर ड्रॉबैक है कि अगर हम इसको एक्सट्रीम उसमें ऑपरेट करें, देन इट मे कॉज द हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, एंड टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इज समथिंग which plays an important role when we compare the power amplifier stages or output stages, कि हम ये देखते हैं कि एक आउटपुट स्टेज का THD कितना है, एंड व्हाट इज टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन? दैट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ the power component of the harmonics to the power component of the original signal, the fundamental, उसको बोलते हैं fundamental, into of course 100%। ठीक है, तो ये जो THD होती है, टोटल हार्मोनिक, ऑफ कोर्स ये जो पावर हार्मोनिक है, क्योंकि फंडामेंटल के बहुत सारे हार्मोनिक होंगे, मे बी थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक वगैरह वगैरह। हो सकता है सिर्फ ऑड हार्मोनिक हो सकता है सिर्फ इवन हार्मोनिक हो सकता है इवन ऑड दोनों हो। सो उन हार्मोनिक्स की अगर आपको एम्पलीट्यूड पता है, राइट, तो यू कैन फाइंड आउट द पावर, because load is common to all the harmonics, so you can find out the power। उन पावर्स को ऐड कर दो, और ऐसे ही जो फंडामेंटल कंपोनेंट है उसके पावर को फाइंड आउट कर लो, देन फाइंड आउट द रेशियो, that becomes a total harmonic distortion। This total harmonic distortion plays a very important role in determining the performance of a power amplifier। नॉर्मली ये माना जाता है कि 0.1% से कम अगर है, देन इट इज ए वेरी गुड ऑडियो एम्पलीफायर। हार्मोनिक्स आउटपुट पे फंडामेंटल के कंपैरिजन में 0.1% हो, then you actually admire the audio quality, correct? There are how do we classify? The basic classification of the output stage is based on the fact that the active device which is used in the output stage, for how much part of the input signal it conducts, right? तो यहाँ चार situations दी हुई हैं, A, B, C, D, right? A, B, C, and D. And what is shown here is the collector current। एक्टिव डिवाइस हम ये मान रहे हैं कि एक बाइपोलर ट्रांजिस्टर है जिसकी कलेक्टर करंट दिखाई गई है कि वो सिग्नल के कितने पार्ट के लिए फ्लो कर रही है। सो एज यू कैन सी इन पार्ट ए, द कलेक्टर करंट फ्लोज फॉर द एंटायर पार्ट ऑफ द साइनोसॉइड। इनपुट सिग्नल अगर साइनोसॉइड है तो उसकी पूरी साइकिल के लिए IC इज फ्लोइंग।
right from this point to back to the same point. And it continues in a similar way. This is called class A amplifier. A is class A amplifier. Then B is the situation when the collector current flows only for half of the input sinusoid. Negative half में current is zero. Class AB is something where collector current flows not only for the positive half but also part of the negative half. So slightly more than half. This is called class AB amplifier. In class C amplifier, current flows only for part of the positive half. और जो maximum part है उसके लिए नहीं flow करती है. Here current is not flowing. So you have these four classes. Active device यहाँ हमने bipolar transistor मान के IC लिखा हुआ है. It could be MOSFET. When it is MOSFET, then this current would be obviously drain current. Is that okay? So in that case, you would call this ID. Now, these are the four classes. Class A, Class B, Class AB amplifier, and Class C amplifier. करेक्ट. अब तीनों एम्पलीफायर में अगर आपको ऐसे मैं बताऊं कि तीनों में जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है वो किस में जीरो है, यू विल इमीडिएटली से कि क्लास ए एम्पलीफायर में, बिकॉज इनपुट सिग्नल पूरी की पूरी है आउटपुट पर, या IC इज फ्लोइंग फॉर द एंटायर इनपुट सिग्नल, देयरफॉर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ any distortion in the amplitude of the input signal, therefore it has no harm. यहाँ पर obviously साइन वेव डिस्टॉर्ट हो गई, नीचे का पार्ट है ही नहीं, इस डिस्टॉर्शन की वजह से इसमें हार्मोनिक्स जनरेट होंगी, यहाँ पर हार्मोनिक्स होंगी, यहाँ भी हार्मोनिक्स होंगे, बिकॉज साइन वेव इज नॉट कंप्लीट, एंड हियर आल्सो हार्मोनिक्स विल बी देयर. अब इन तीनों केसेस में हार्मोनिक्स को नलिफाई करने का या उनको मिटिगेट करने का कोई मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा, जिससे कि साइन वेव जो ओरिजिनल साइन वेव थी वो हमें मिल सके. करेक्ट. तो let us now see the class A output stage. In figure 14.2, a bipolar transistor version of class A amplifier, the basic circuit is shown here. Correct. यहाँ जो active device जो output stage की है वो Q1 है, and Q1 has been provided bias with transistor Q2. ये जो Q3 है, Q3 is basically a current mirror. Q2, Q3 is a current mirror. यहाँ पर वो जो ट्रांजिस्टर है उसको डायोड की तरह शो कर दिया है. करेक्ट. तो अब ये करंट मिरर की तरह काम कर रहा है, एंड Q3, Q2, Q3 आर डूइंग नथिंग बट दे आर setting here current I. Is that okay? Which provides bias to Q1. And when there is no signal, then obviously I current is flowing here, I current is flowing here, and therefore IL in that case is zero. इनपुट पर सिग्नल अगर नहीं है तो IL is zero. जैसे इनपुट सिग्नल पॉजिटिवली बढ़ता है, so what happens? This current I plus I इंक्रीज होती है और ये I माइनस I हो जाती है और इधर से करंट फ्लो करती है I. Is that okay? और इस साइड में this current becomes I minus I, this current becomes I plus I, and this current will be inward I.
Is that okay? Okay, sir. So what happens, this signal gets transferred to output in same phase. uh, to make you understand more, Q1 is acting as nothing but emitter follower or the common collector amplifier, of which the voltage gain AV is unity, right? अब ये जो मैक्सिमम वोल्टेज इसकी आउटपुट की वो क्या हो सकती है कि ये ट्रांजिस्टर Q1 सैचुरेशन में चला जाए और ये प्लस VCC, so this might go to plus VCC side, and what will happen to maximum negative? You see, this goes into saturation Q2 and it goes to minus VCC. So peak इसकी वो जो हो सकती है plus VCC by minus VCC हो सकती है. In that case, what will be IL max? IL max would be plus VCC by RL and minus VCC by RL. Is that okay? Yes, sir. और ये जो प्लस VCC मैंने लिखा है ये तब माना है जब ट्रांजिस्टर के अक्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है यहाँ पर. But frankly, there will be some drop. So that drop would be minus the VCE of Q1. जो भी मिनिमम ड्रॉप होगा, ऐसे ही यहाँ पर भी होगा एक ड्रॉप प्लस VCE अक्रॉस Q2. सो एक्चुअली जो पीक वोल्टेज आउटपुट पे होगी वो एग्जैक्टली प्लस माइनस VCC से नहीं होगी बट थोड़ी कम होगी, राइट? Which is what is now explained in these things. Can you see that? और ये जो ऑफसेट दिख रहा है VB1 का, दिस ऑफसेट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर सम वोल्टेज वुड बी, कुछ तो ड्रॉप यहाँ होगा. That drop is what has been considered as the offset, which if you ignore compared to what you're getting this thing, in that case, you can say that VO by VI is unity, right? So this is the transfer characteristic, how input is transferred to output. That's where you have input, that's where you have output. Is that okay? Yes, sir. Now, if you work out the power dissipation, ये मैंने पहले अभी हाईलाइट किया आपको कि पावर कन्वर्जन इज हैपनिंग इन एम्पलीफायर. ठीक है, यू हैव द एम्पलीफायर, इसको आपने प्लस माइनस डीसी से बायस किया है और आउटपुट पे क्या ले रहे हो? आउटपुट पे आप एसी ले रहे हो, इनपुट से कोई पावर नहीं ली गई सिग्नल सोर्स से. और ये जो प्लस माइनस वीसीसी डीसी है, इससे एक डीसी पावर मिल रही थी, उस डीसी पावर को हमने कन्वर्ट कर दिया एसी पावर में. This is now converted into AC power. That's what you get here. So how this is converting is what is important. So power conversion efficiency is the load power divided by the supply power. And what will be the load power? Load power is जो साइन वेव आउटपुट पे बन रही है, उस साइन वेव का ये पीक वोल्टेज है जो लिखा है यहाँ पर VO कैप. ठीक है, VO कैप को अगर हम √2 से डिवाइड कर दें तो RMS मिल गई वोल्टेज की. ठीक है, इस RMS वोल्टेज को अगर हम लोड से डिवाइड कर दें
स्क्वायर करके, तो ये पावर हो गया. इज दैट ओके? Yes, sir. तो दैट्स व्हाट इज द लोड पावर, विच इज हाफ VO स्क्वायर बाई RL. अब सप्लाई से जो पावर आ रही है, जो सप्लाई हमने लगा रखी है, सप्लाई से कितनी पावर आ रही है? प्लस माइनस VCC है. मैं इस आउटपुट स्टेज की बात कर रहा हूं. सप्लाई से कितनी पावर आ रही है? Two VCC times I. You're right. Okay, so in this, as one of you rightly said, the powers coming from DC is, ये है बॉक्स, ठीक है ना? अब इस बॉक्स में यहां माइनस VCC है, यहां इनपुट हम दे रहे हैं. when I don't give any input, when signal is 0, उस समय how much is this current flowing from Q1? This current is I. How much is this current flowing? This is also I. यहां पर है प्लस VCC, यहां पर कितना है? माइनस VCC. आउटपुट पे कोई करंट फ्लो कर रही है क्या उस समय? when there is no input, output is also nil, so there is no output, but still there is power being consumed. यहां से कितनी पावर जा रही है? प्लस VCC इंटू आई. यहां पर कितनी पावर है? इसको भी आप मॉड में बात करो, दिस ऑल्सो VCC इंटू आई. सो टोटल पावर इज हाउ मच? DC पावर, PDC is twice VCC into I. Is that okay? Yes, sir. Right. So that's the supply power being given. $14.9. Now what will be the efficiency? Efficiency will be the signal power divided by the supply power. Is that fine? Is this okay? Yes, sir. अब हम इसको क्या कर रहे हैं? इसको हमने देखो दो पार्ट में सेपरेट करके लिख दिया. अब इस VO की मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट मे गो अप टू VCC, इजंट इट? जो पीक वोल्टेज है सिग्नल की, वो VCC तक जा सकती है. तो मैक्सिमम एफिशिएंसी बताने के लिए वी हैव टू राइट VO टू VCC. एंड व्हेन यू डू दैट, और ये भी अगर मान लो कि जो टोटल जो वोल्टेज हो रही है I into RL, if that also approaches to VO, which is equal to VCC, then the efficiency will approach to what? The maximum value will be how much? 1/4, which is 25%. So class A amplifier की जो maximum efficiency है, please note that maximum efficiency eta maximum will be equal to 25%. इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस एम्पलीफायर को जितनी DC पावर दे रहे हो, अगर आप
100 वॉट दे रहे हो तो आउटपुट पे लोड को जो मैक्सिमम पावर जा सकती है आरएल को, वो कितनी जाएगी? 25 वॉट। बाकी कहां चली गई? बाकी सारी यहां अंदर जो एक्टिव डिवाइस लग रही है उस पे डेसिपेट हो रही है। कितनी? 75 वॉट इसमें जो एक्टिव डिवाइस है उसके अक्रॉस डेसिपेट हो रही है। वो हीट अप होगा, गर्म होगा। जो पावर ट्रांजिस्टर है, क्योंकि वो 75 वॉट वहां डेसिपेट हो रही है, सिर्फ 25 वॉट ही लोड, वो भी मैक्सिमम एफिशिएंसी है। दैट्स इंपॉर्टेंट, which means it will be always less than 25%, say around 20% in the best possible case. So 80% is getting wasted inside the active device. Is that correct? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Now, class A amplifier, in what, in your opinion, is it a good amplifier from the efficiency point of view? No, No, sir. sir. No, it is wasting lots of power inside itself. Let us go to class B stage. In class B amplifier, this is a basic class B configuration given in figure 14.5, right? It comprises of two transistors, one NP and one PNP. So here, if you give this signal, what will happen? For the positive part, NPN will act as the emitter follower, right? And for the negative part, this PNP will act as amplifier. Output will be available for both, right? So you will get here the positive signal and also the negative signal. And there is, if you look at the transfer characteristic, there is a dead band. यहाँ पर एक dead band दिख रहा है. इस डेड बैंड की वजह से कायदे से ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए थी? It should have been passing through this origin. और अगर ऐसा होता तो जो इनपुट साइन वेव है वो पूरी की पूरी आउटपुट पे मिलती. बट बिकॉज ऑफ डेड बैंड व्हाट विल हैपन, दैट सिग्नल will not be available for this part and for this part, and will cause a distortion जिसका नाम होता है crossover distortion. crossover distortion. तो यहां पर एक इस तरह का वो मिलेगा. करेक्ट? अगर ये क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन किस तरह से हम मिटिगेट कर लें, खत्म कर लें, नलिफाई कर दें, देन दिस इज गोइंग टू बी अ गुड एम्पलीफायर, राइट? अब इसकी एफिशिएंसी निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे? देखो, लोड पावर वैसी होगी V²/2RL 14.12. सप्लाई पावर will be here different. क्योंकि यहां पर करंट पूरे पार्ट के दौरान फ्लो नहीं कर रही है, ओनली फॉर द हाफ पार्ट इट इज फ्लोइंग. So if the input is at 0, output current is 0. The current flowing through the transistors is 0, isn't it? अगर इनपुट सिग्नल यहां पर 0 है तो ना तो ये कंडक्ट कर रहा है और ना ही ये कंडक्ट कर रहा है. So therefore no current flowing. And for the positive part, this transistor is conducting and it is causing current flow like this. For the negative part, this one is conducting and causing a current flow like this.
right? So to figure out DC power, supply power, you have to find out the average. So VO is the peak. If VO is the peak for one side, ठीक है, दूसरे वाले का भी पीक VO है, this is say VO, this is also say VO. तो इसकी अगर सिर्फ पॉजिटिव वाले की हम एवरेज वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगी? ओनली फॉर द पॉजिटिव पार्ट. आपने रेक्टिफायर पढ़ा होगा. अगर VM पता है, VO पता है, उसका एवरेज क्या होगा? VO बाई पाई. ऐसे ही नीचे वाले का अगर हम निकालें तो क्या होगा इसका एवरेज? ये भी होगा VO ओवर पाई. दोनों को ऐड कर दें तो क्या होगा? और पावर के लिए कहा गया है एवरेज डिवाइड बाई दी, वन सेकेंड, okay. So when you find out the power is going to be the current how do you find out the average current into the voltage? Voltage is VCC. So average current is how much? Average current is average voltage divided by RL. So this part is the average current into VCC. Total power क्या हो जाएगी? Twice of this. So this is what is this one. So total supply power is this. Total signal power is this. Efficiency can be computed using equation 14.15. PL by PS. So when you do PL by PS, right? And in the best possible case, VO would be equal to VCC. So if that is the maximum efficiency, so eta maximum is going to be pi by 4, which is 78.5%. And the power dissipation is going to be obviously PS minus PL. The supply power minus the load power will be the device power. जो active device लगी है उसमें, उस पर कितना dissipate हो रहा है. So 22.5% dissipation वहां पर होगा, right? Okay. Then in class AB amplifier, well, first of all, in class B amplifier, how the crossover distortion can be removed is by connecting an amplifier in negative feedback between the output and the input. Thereby, आपको पता होगा इससे जो वर्चुअल शॉर्ट की वजह से ये जो क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन है इसमें खत्म हो जाता है. So that's the way we reduce the crossover distortion. In class AB amplifier, what happens? We modify the input of the push-pull. By the way, this arrangement is called the push-pull arrangement. That for the positive cycle, Qn is pushed into conduction, and for the negative amplifier, QP is pushed into the conduction. और दूसरी तरह से, for the positive cycle,
QP is pulled out of conduction, and for the negative cycle, QN is pulled out of the conduction. So push-pull, pushing into conduction, pulling out of conduction. So this arrangement is called the push-pull amplifier. Class B push-pull amplifier. The same push-pull amplifier configuration is used in class AB stage with modification of this type. So when you do this, then both transistors conduct for more than their half cycle, and transfer characteristic slope approaches to this thing, right? Class AB output resistors can also be used with these D1 and D2 to provide the bias. And in some cases, even the VB multiplier is used to provide the bias. This is the VB multiplier, which is replaced. This circuit is called VB multiplier. So what happens here? The voltage across this is computed as IR into R1, which is equal to VBE. And voltage across this is, let us say, VBB. So VBB is how much? VBB is IR into R2 plus R1. अब इसमें से IR R1 बाहर निकाल दें तो this becomes VBE into 1 plus R2 by R1. So VBB becomes a multiplier of VBE. This is a multiplier. And this multiplier establishes a voltage VBB between the base of QN and the base of QP to provide sufficient bias to make transfer characteristic pass through the origin and to eliminate the crossover distortion. In fact, this is the circuit which has been used in op-amp 741. 741 के आउटपुट स्टेज पे यही वो यूज हुआ है, जिससे कि अंदर की बात कर रहा हूँ, op-amp 741 के इंटरनल सर्किट में. Right? So now rest is left for you to I'll upload very soon some learning material on more on the power amplifiers. ठीक है, आप अब खुद इसकी स्टडी कर सकते हो. I'll ask you to mark your attendance now.